Everyone, I am Garima Singh signing in for today's lecture. Today we'll discuss the remaining part of the chapter of People as Resource, the second chapter of our economics. Before we start, let me know how are you all doing. I hope everybody is doing good and are safe at their place. If yes, please drop in the thumbs up so that I can know that you all are doing good. Now moving back to the chapter, in my previous video I have discussed the concept regarding how population is important in an economy, why a population is considered as an important factor in the economy and what role does it play. Okay, now today we'll continue with the same chapter and understand the quality of population. When I say quality of population, it means पॉपुलेशन जो हमारे देश में है उसकी क्वालिटी क्या है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट. Also, all of these factors and several other factors help in determining the quality of the population. भाई किस तरह के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे लोग हैं वहाँ. ओके, क्या पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री is an asset to the nation or it is an liability to the nation. Now, why this quality of population is important? Because it decide the growth of the nation. अगर हमारी population, if the population of the nation is a liability, मतलब burden है. Okay, liability is what? A burden which has to be taken care of by somebody else. Okay, so अगर ये liability है population, it means illiterate and uneducated population है हमारी. Okay, whereas asset means it is something very useful to us. Okay, and which will help the nation in growing. So if the population is an asset, the population will be literate and educated. पढ़े लिखे होंगे सब लोग, सबको knowledge होगी and everybody will understand what is good and what is bad. Okay, now let's discuss the factors of quality of population in brief. The number one factor is education. What do you mean by education? It means going to the school, learning, gaining concept as per in India. Okay, so attaining education. Why education is an important factor in determining the quality of population. Let's take an example and after that I'll explain why education plays an important role in determining the quality of population. Okay, let's assume there is a boy. He goes to the school or various institution and attains the education. Okay, like you guys are doing. Now, in the initial years, it will bore him. He will get bored. भाई क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा, क्या यूज़ है इस पढ़ाई का, आई एम नॉट लाइकिंग इट. Instead of studying, why not I go out and play with my friends? Why not I enjoy mobile phone games? Okay, so initial year में he'll think of everything because this education, the process where he is attaining the education is making him feeling bored. Okay, but you guys don't realize that what you are attaining at present will help you in coming year or making your future a better and a bright one. Okay, so in the later year it bring him the fruits of his hard work. The initial years when he worked hard in learning the concept and attaining the education, in the later years it bring him fruits. Fruits means he got better job and salary. Okay, now also the education opened a new horizon for him. Now he is educated and literate. Now he understands each and every aspect of the life. Okay, he has new goals and aspiration. Okay, every day he wants to do something better. Now education, as you have seen, not only is helpful for the boy but it will also help our society to change into a better society. ये एजुकेशन जो उसने गेन की है वो सिर्फ उस लड़के के लिए ही काम नहीं आएगी, बल्कि उस लड़के को एक अच्छी बेटर सोसाइटी बनाने के लिए द बॉय विल कंट्रीब्यूट हियर. ओके, बेटर सोसाइटी मतलब वी विल हैव हाई नेशनल इनकम, हाई ग्रोथ रेट, हाई डेवलपमेंट, कल्चरल रिचनेस होगी, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस मतलब
जो गवर्नमेंट रूल कर रही है कंट्री में उनके लिए भी इजी हो जाएगा, बिकॉज ही इज एजुकेटेड and literate. Now he understands each and every aspect. Therefore, whenever the government will come up with the new program and policies, he will have the awareness कि क्या अच्छा है और क्या नहीं है, and he will help the government in performing his functions. So we have understood how education plays an important role. Okay, now let's see education, this factor in regard to the present time. What are the various provisions made for to enhance this factor called education? Number one provision here is universal access, retention and quality in elementary education. It means जो education है आज के टाइम पे यूनिवर्सल एक्सेस है उसको, मतलब हर किसी को मिल सकती है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड में है चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड में है. ओके, एवरीबडी कैन हैव access to the education. Also, we have worked upon to improve our quality of elementary education. Elementary education means जब बच्चों का बेस बनता है इनिशियल ईयर की जो एजुकेशन है, we have worked upon the quality and हमने उसको अच्छा करने की कोशिश की है, so that when the students get into and or are at this level, their base is already good enough so that in future they do not face any problem. Okay. Other provision is there is special emphasis on girls education. As you must have noticed in your surrounding कि पहले के टाइम पे if we talk about our grandmothers and all, आपने देखा होगा वो लोग दादी दादा इतने लोग स्कूल नहीं जाते थे. ओके, कंपैरेटिवली अगर हम गर्ल्स और बॉयज को कंपेयर करें, गर्ल्स की नंबर ऑफ enrollment in school was very very less than that of the boys. Okay, so we have made special emphasis so that we can enhance the girls education. Okay, government has come up with several policies like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सुना है ये तो आपने इसके बारे में. तो ये क्यों है? ताकि लोग अवेयर हो जाए और लड़कियों को भेजे स्कूल, so that even girls can go and attain education. Okay, next is establishment of new school, example Navodaya Vidyalaya in each district. Government has come up with various establishment of new school. हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय तो मिलता ही है. Okay, and these are the government schools which are very good, are in very good condition and are of very good quality. Okay, they provide very or the best quality of education in the district. Okay, so नवोदय विद्यालय जैसे ऐसे बहुत सारे schools के साथ government आई है, so that each and everywhere schools are available and therefore leading to the universal access of education. Okay, another provision is vocational training has also started. अब पहले सिर्फ ये नहीं है सिर्फ पढ़ते रहो. Now we do also go for practical training of that subject. Okay, therefore this vocational training will help us in improving the skill and knowledge, and in future will help us attaining a better job and secure our future. Okay, also the plan outlay of expenditure has also increased in education. When I say plan outlay expenditure क्या है? खर्चा. प्लान आउटले क्या है? जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद वी स्टार्टेड मेकिंग 5 ईयर प्लान्स. ओके, जब हमारा फर्स्ट प्लान आया था विच वाज अराउंड 1950 to 55, सो आवर कंट्रीब्यूशन ऑन एजुकेशन वाज ओनली 0.65% ऑफ द GDP. बहुत ही ना बराबर हम एक्सपेंडिचर खर्चा करते थे अपनी एजुकेशन पे. वेयर एज तब 11th प्लान आया 2013 and 14 में, तो our contribution is much higher, which is around 3.3% of the GDP. Okay, and if we talk about the present day, the concept of this planned outlay has been expired. Now we have Niti Aayog. We do not go for 5-year plans. Okay, and we do not go for this planned outlay. I hope this is clear. So let me explain you via this bar graph. Okay, on my y-axis I have the percentage and on x-axis I have the years. Okay, this dotted bar graph shows the female participation, blank is for male participation, and the line 1 is for the total participation. Okay,
This is the in terms of education or the literacy rate. Okay, looking at 1951, you will see only very less of the population was engaged in the education, and as compared to female, males were more educated. Okay, similarly you will see the same type of things in the coming years, that there was seen a growth in the total literacy rate, also in the male literacy rate, but when it comes to the female literacy rate, the growth was not as much as the total and the male literacy rate. Okay, now coming to the various year, now we'll come to 2011. We'll see in 2011 the male literacy rate overshoot so much that it even crossed the total literacy rate. ओके, टोटल लिटरेसी रेट में से भी सबसे ज्यादा कौन एजुकेटेड थे, कौन लिटरेट है? मेल्स. ओके, एंड हियर आल्सो फीमेल आर आल्सो एजुकेटेड, बट कंपैरेटिवली टू मेल्स देयर इज लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम फीमेल साइड. ओके, so what we get to know from the above result, that literacy rate has increased from 18% to 74%. 18% literacy rate था हमारे 1951 में, whereas it increased to 74% in 2011. Okay, also the literacy rate is much higher than much higher in males than in females. Okay, तो literacy rate मतलब male ज़्यादा educated है than to our females. Okay, now also literacy rate varies from state to state. ये वेरी करता है हर स्टेट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से केरला के अंदर, केरला हैज 94% ऑफ द लिटरेसी रेट, मतलब 94% वहां के लोग पढ़े लिखे हैं. Whereas बिहार में we have only 62% of the literate population. So you can see the difference, that education or the literacy rate varies from state to state. See the reasons why literacy rate increased. The number one is primary school expanded. अगर आप नोटिस करोगे few past years के अंदर और आज के टाइम को, you will notice that we have not many schools as compared to our past. Okay, it is because all the concept of primary school became so famous and people came up with so many private schools, etc. Therefore, the primary school expanded. Okay, but there was one loophole here, that the education quality was not that good. Due to the poor education quality, we registered a high dropout rate. Okay, बच्चे प्राइमरी सेक्शन तक ही पढ़ते थे, उसके बाद they tend to drop out, बाहर एडमिशन छोड़ देते थे अपना, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी was not that good. Now let's talk about सर्व शिक्षा अभियान. This is very important. Listen to it very carefully. Okay, so this is a policy by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी पीपल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करवा रही है, यूनिवर्सली एक्सेस करवा रही है एलिमेंट्री एजुकेशन को इन द एज ग्रुप ऑफ 6 years to 14 years. So now you are aware, when I talk about elementary education, it is from the age group of 6 years to 14 years. Okay, so ये अभियान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इस इनिशिएटिव से बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. ओके, एम क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. Its aim is achieving the goal and universalization of elementary education, so that each and every student of the age category of 6 to 14 years can achieve their goals and can have access to the elementary education. Talking about other factors like bridge course and back to school campus course, it has helped to increase the enrollment ratio. When I say enrollment ratio, means people going and taking admission or getting themselves enrolled in various institutions. Okay, now also the government has came up with the midday meal scheme in order to increase the attendance and to improve the nutritional status. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे फ्री में पढ़ाई जाते हैं और काफी गरीब फैमिली से रहते हैं, देयरफॉर गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील स्कीम करके निकाली, सो दैट रिसेस के टाइम में वो खाना खाने के बहाने से घर जाते हैं और घर ही रह जाते हैं.
so that people do not miss out the school premises and the students are attending the whole of the school time. Therefore, the government introduced this midday meal scheme. इससे attendance increase होगी. Apart from that, the food they provide in this midday meal scheme are full of nutrition. Also, it will help in improving the nutritional status of the students. Now, these policies, how does this policies that we have discussed till now has helped us to add to the literate population. Okay, literacy rate में literate करने के लिए इन्होंने contribute किया है इन policies ने. And in 2011, which was our 11th 5-year plan, we have noticed that there was increase in the enrollment ratio in the age group of 18 to 23 years. Okay, अब सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं बट हायर एजुकेशन के लिए भी लोग एनरोल करवा रहे थे ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years. Okay, now our percentage grew to 11% in 2011 and by 2015, which was the 12th plan, it grew to 21%. So you can see how the enrollment ratio in the age group of 18 to 23 years have increased. Now let's see what all these policies which help in growing the literacy rate focus upon. Number 1 is increasing the access, quality, adoption of state specific syllabus, vocational training and networking on use of information technology. नंबर 1 बोलता है कि ये सब पॉलिसीज हमें हेल्प करती है सो दैट एजुकेशन इज अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से है चाहे अर्बन बैकग्राउंड से. देयरफॉर इंक्रीजिंग द एक्सेस. सेकंड पॉइंट इज क्वालिटी. क्वालिटी शुड बी अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन so that people don't drop out in between. Also, you have seen, let's take the example of our own state Haryana. जो हमारे स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस है वो क्या हमारे प्राइवेट स्कूल्स में है? नो, वी फॉलो CBSE, whereas गवर्नमेंट स्कूल फॉलो हरियाणा बोर्ड, बिकॉज स्टेट अपने हिसाब से स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस चूज करती है अपने स्कूल्स के लिए. ओके, apart from that we also focused on training and on the IT sector. Okay, now coming to the second point, distant education, formal and non-formal education. We also focused on distant education. अब घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं. You need not to go there in the institution and attain education. Therefore, distant education का हमारा कॉन्सेप्ट आता है, formal and non-formal education का आता है. Okay, and over 50 years, number of the institution has increased. When I say institution, it include all the colleges, school, universities. Okay. Coming to the next factor, which is another important factor in determining the quality of education, it is health. When we talk about health, अगर health अच्छी होगी, therefore we will have more of the potential and ability to do work. Okay, brain भी अच्छे से function करेगा, हम अच्छा output निकाल पाएंगे. As you all know, like the illiterate person were the liabilities, in the same way, unhealthy person in a nation will be a liability on the nation, whereas healthy person will be an asset. Healthy है तो बहुत अच्छे से potential और ability को हम use कर सकते हैं. Okay, therefore it becomes important to improve the health factor. Therefore it is our priority of the time. Now, coming to the national health policy, it aimed at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services, especially of the underprivileged people. When I say health policy जो है हमारी national policy, वो किस चीज़ पे एम करती है? ताकि हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल है, बेसिक सर्विसेज है हेल्थ की, वो सबको अवेलेबल रहे, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी रहे उनकी. फैमिली वेलफेयर के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है. ऑल्सो अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस, भी क्या क्या चीज़ खानी चाहिए विच इज़ हेल्दी फॉर बीइंग अ हेल्दी बॉडी. ओके, और ये पॉलिसी स्पेशली किसको कवर करती है? द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. ओके, जिनके पास चीज़ें नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा कवर करेगी. Over the past decades, we have noticed in India that we have built up vast infrastructure, okay, and developed the manpower which are being utilized in different sectors
कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स एंड अदर बेसिक सर्विसेज रिगार्डिंग हेल्थ अवेलेबल है। देयरफॉर हम इसकी वजह से हम मैन पावर को डेवलप कर पाए हैं, जो कि हम उनको यूज करते हैं इनटू डिफरेंट सेक्टर टू इंक्रीज आवर टोटल प्रोडक्टिविटी। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ द हेल्थ पॉलिसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज्ड। व्हेन आई से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट मींस इन्फेंट मतलब छोटा, जो बच्चे पहले 1 साल के भी नहीं होते थे और मर जाते थे, ओके, विद इन द फ्यू मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, तो वो रेट बहुत ज्यादा हाई था। बट ड्यू टू द वेरियस हेल्थ पॉलिसी एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज नाउ डिक्रीज्ड. It was 147 which has came down to 42 in 2011. Okay, अब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं मरते हैं. Also, due to this health facilities, life expectancy has increased. पहले on an average लोग बहुत कम साल के लिए जी रहे थे. Due to better facilities, अब हमारी life expectancy increase हुई है and it became 66 years on an average लोग जीते ही हैं. Okay, also we have focused on the nutrition status which has helped in improving the mother and child care. Okay, apart from that, these were the merits. Now let's see, is the health services evenly distributed all over India? No, there is uneven distribution of basic services like hospital, bed, doctors, nurse. Okay, now let's see the various examples. States like Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra, these states have the maximum number of colleges. Okay, regarding medical colleges. This table will help you understand how much we have grown in the health sector. The number one shows the sub-center primary health center. In 1951, we had only this much, which increased to 1,81,319 in 2013. Similarly, hospitals also increased, number of beds also increased, number of available doctors also increased, and the nurses, when we talk about nursing thing, we are talking about general nurses here. This also increased from 18,000 to 1 lakh in number. And when I said uneven distribution, you will notice rest of the factors has increased remarkably. But when it comes to hospitals, hospital के अंदर देखो सिर्फ 10,000 कुछ का ही फर्क पड़ा है. Therefore, uneven distribution इसलिए है क्योंकि there are some places where we have basic facilities and some places where we do not provide them. Okay, another fact here, in India we have only 381 medical colleges and 301 dental colleges. Now coming to the another important factor which is unemployment. Okay, if people have employment, अगर काम है, रोजगारी है लोगों के पास, it is an asset. But अगर लोग बेरोजगार है और काम नहीं है, it change into the liability. Okay, when I say unemployment, what do you understand by unemployment या बेरोजगारी? It means when people are willing to work, they are willing to work, मतलब काम करना चाहते हैं but are not getting work, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है. It is defined as unemployment. Okay, and when we talk about the workforce in India, the workforce population is from 15 years to 59 years of age. 15 से 59 years तक की एज कैटेगरी के लोगों को हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन बोलते हैं. टॉकिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात करें तो इट एग्जिस्ट इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द अर्बन एरिया. ओके, बट द नेचर, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स. नेचर अलग है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है दोनों रीजन में. ओके, टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज, वी डिवाइड द अनएम्प्लॉयमेंट इनटू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. पहले बात करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की. जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सीजन है जब उनको काम मिलेगा और जब वो सीजन चला जाएगा तो उनको काम नहीं मिलेगा. सपोज हम लेते हैं रूरल एरिया में एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर. अब आया गेहूं का सीजन, ग्रोइंग ऑफ व्हीट. ओके, तो मैंने व्हीट लगाने के लिए मुझे लेबर चाहिए. देयरफॉर आई विल गो एंड एम्प्लॉय पीपल एज लेबर. Okay, I'll take laborers to work in my field. Okay, not employ is the wrong word here. I'll go and hire labor to work in my field. Okay, so they will work till my crops are being harvested. Okay, मैं तब तक उनको रखूंगी उन लेबर को अपनी फील्ड पे
तब तक मेरी फसल तैयार ना हो जाए और मैं उसको जाके बेच ना दूं। ओके तो जब तक वो सीजन था, गेहूं का सीजन था, आई हायर्ड लेबर एंड पीपल हैड वर्क टू डू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके तब सीजन चला जाएगा वीट का, आई विल आस्क देम टू लीव, भाई चले जाओ, मेरा काम हो गया, तुम्हें वेजेस मिल गई, नाउ यू लीव। ओके दिस इज कॉल्ड seasonal unemployment. Now coming to the other type of unemployment, disguised unemployment. Okay, now let me give you one example so that the idea of disguised unemployment is very clear in your head. Let's suppose that there is a family of 4 members. Okay, 4 मेंबर है इस फैमिली में एंड दे हैव अ पीस ऑफ लैंड। ओके रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, लैंड है, दिस लैंड इज अनइरिगेटेड और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस लैंड पे। देयरफॉर इस लैंड पे वैसे काम तो है सिर्फ 2 लोगों का, इट रिक्वायर्ड द वर्क ऑफ 2 people, बट ड्यू टू these 2 people do not have any other best alternative to go and work, or they do not have work in their life or better opportunities, they decide to work with their parents on this piece of land. Okay, where the land required only the work of 2 people, but 4 people are working here. Okay, क्योंकि 2 जन का काम 4 जन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी वर्क एबिलिटी पोटेंशियल जो है वर्क का डिवाइड हो जाएगा। ओके 2 जन के काम पूरे 2 जन कर सकते हैं अच्छे से इस लैंड पे, लेकिन 4 जने कर रहे हैं, तो 2 जन जो अपनी पोटेंशियल लगाते हैं, अब 4 जन क्योंकि काम कर रहे हैं उतना पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। Therefore, this type of unemployment, क्योंकि इनके बच्चों के पास कोई बेटर जॉब नहीं थी, स्किल नहीं था कि वो जाके कहीं और काम करते, therefore they decided to stay with their parents and work on the piece of land. This is called the disguised unemployment. It means when the required number of people are actually not working and more than the required number of people are doing the same work, it will lead to the disguised unemployment. बेटर क्या होता ऑप्शन कि फैमिली में अगर 2 जन ही रिक्वायर्ड है तो 2 जन यहाँ काम करें, बच्चे जो थे वो एजुकेटेड होते हैं, स्किल होती कोई अच्छी, दे शुड हैव गॉन टू अदर सेक्टर्स लाइक सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड अर्न देयर इनकम, उससे पोटेंशियल भी अच्छा होता और इनकी इनकम भी अच्छी होती। देयरफॉर ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी प्रॉब्लम अराइज ना होती। कमिंग टू द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में भी सेम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों ने डिग्रीज की है, ग्रेजुएशन मास्टर्स, but still they do not have proper work, therefore leading to the educated unemployment. Okay, urban area में it is divided into 2 parts, technical unemployment and lack of technique. टेक्निकली मतलब जो लोग स्किल्ड है उसके बाद भी उनके पास काम नहीं है, और लैक ऑफ टेक्निक मतलब कैजुअल लेबर्स जिनके पास कोई स्किल नहीं है। ओके तो वो लोग क्या करते हैं, डे टू डे बेसिस पे जाके स्ट्रीट वेंडर्स की तरह काम करते हैं। देयरफॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट हैज चेंज्ड द एसेट। एसेट क्या होता है हमारे पास, अगर एम्प्लॉयड पीपल होते, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, ठीक है, दिस एसेट हैज चेंज्ड इनटू अ लायबिलिटी, इट हैज चेंज्ड इनटू अ बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So talking about India, we get to know most absorbing labor sector. सबसे ज़्यादा लोग कहाँ employed है, in the agriculture sector. Whereas when it comes to share in GDP in terms of percentage, GDP में सबसे ज़्यादा कौन contribute करता है, it is our service sector. Okay, now time to tone your brain. Number 1 is define asset and liability. Second question, define disguised and seasonal unemployment. Next is factors determining quality of life, and the last for today is name the education policy and its aim that we have discussed in this video. That's it for today's video, guys. Do not forget to like, share and comment in the comment section, and most importantly, those who haven't subscribed till now, make sure you subscribe to the channel so that every time I post a video you get a notification. Also guys, if it will mean a lot if you will press the thumbs up icon under the video. That's it. I am Garima Singh signing off from today's lecture. See you very soon.